नमस्कार, ई न्यूज़ भारत से मैं मलय। नेशनल टेस्ट हाउस भारत का एक विश्वस्त प्रतिष्ठान। नेशनल टेस्ट हाउस ऐसा एक संगठन है जहां पर खाने का चीज से लेकर 2000 किस्म की चीज का परीक्षण होता है। परीक्षण होने के बाद उसी चीज को ISI ट्रेडमार्क दिया जाता है। शनिवार उपभोक्ता विषयक अतिरिक्त सचिव श्रीमती निधि खारे इस प्रतिष्ठान की दौरा किया। उसी दिन MTH आलीपुर कैंपस, साथ में सॉल्ट लेक कैंपस का दौरा किया। RPPTA फुटवेयर टेस्ट लैब और वैद्युतिक लैब एवं ट्रांसफार्मर रूटीन टेस्ट के उद्घाटन के लिए मैडम खारे ने कलकत्ता आए थे। इसी दिन माननीय निधि खारे के साथ नेशनल टेस्ट हाउस के महापरिचालक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं पूर्वी क्षेत्र की महापरिचालक शेर सिंह और इसी संस्था की उच्च अधिकारीगण उपस्थित थे। पूरा कार्यक्रम व्यवस्थापना थे अभिषेक प्रसाद और उसका सहयोगी। इस पूरा कार्यक्रम का कवरेज किया ई न्यूज़ भारत। देखते रहिए ई न्यूज़ भारत। Very happy to see कोई एक इंस्टीट्यूशन जब 100 इयर्स का भी ऊपर हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है that it has lasted so long. तो बाकी लोगों के या कॉन्फ्रेंस रूम हो there? Yes. Yes. सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको ये न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? NTH एक अग्रणी संस्था है जो कि देश में विभिन्न चीज़ों के बारे में टेस्टिंग करती है और एक तरह से जो कंज्यूमर के एक गुणवत्ता परक उत्पाद हैं उनमें सहायता करती है। तो आज का जो उद्देश्य था आने का वो ये था कि हम इस पूरे एरिया में जो ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण सभी लोगों को दूसरी जगह पे और बहुत एट वेरी हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको टेस्टिंग कराने दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो आज हम लोग ये देखने आए थे कि क्या NTH की कोलकाता ब्रांच में क्या हम ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का एक वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैबोरेटरी बना सकते हैं कि नहीं। और मुझे बड़ी उम्मीद है और आशा है कि हम बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए जल्द से जल्द हम यहाँ पर एक टेस्टिंग फैसिलिटी क्रिएट करना, सेटअप करना चाहेंगे। पिछले साल इनका 111 साल का दिवस मनाया गया था
और आगे आगे और भी ज़्यादा टेस्टिंग होगा यहाँ पे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल सही है कि एक तरह से एनटीएच एक ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। यही नेशनल टेस्ट हाउस से ही हमें सीएसआईआर या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जैसी संस्थाएं निकली हैं। और गर्व का विषय है कि एनटीएच आज भी बहुत ही सार्थक रूप से देश में अपनी टेस्टिंग के ज़रिए एक बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रही है और अपना योगदान दे रही है। तो अब जैसे हाल में हम ड्रोन की टेस्टिंग कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स की टेस्टिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट कराई है, जो स्विच गियर्स हैं इसको हम करेंगे। और फिर आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिसका कि भारत में बहुत तेज़ी से उदय होने जा रहा है, तो चाहे वो बैटरी टेस्टिंग हो, चाहे वो चार्जिंग स्टेशंस के टेस्टिंग का प्रावधान हो, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। और एनटीएच इसमें अगले वर्षों में ये कार्य सफलतापूर्वक करेगा। मैडम आपका डेजिग्नेशन प्लीज़। मैं निधि खरे, मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके मैम, थैंक यू। काफ़ी बेसब्री से यहाँ के सारे स्टाफ को इंतजार था कि मीट करें और देखें लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं और कितनी फैसिलिटीज, कितनी अच्छी फैसिलिटीज। So we are very happy to have you here, ma'am. And I would like you to say a few words for encouraging our staff. They are very. This is the main place of all NTS, all seven. Biggest establishment is here, and the oldest, of course, we have seen. So, ma'am, if you so आप थोड़ा सा मैम प्लीज। Sure. So, DG NTH, Mr. Alok Kumar, Dr. Alok Kumar Shrivastava, my colleague and a very great collaborator in this whole scheme of things, because without him I would not have come. So, Mr. Bharat from BIS and all my colleagues from NTH. Although I have spent more than 3 years in the department, and I have long cherished, the wish to come to this place, because being a science student myself, it was somewhere, in my mind also to at least go down to those, to the place where stalwarts of Indian science have worked and who have actually given such a strong foundation to India's scientific growth. And I think it is very, very inspiring journey. So even when I have been working in the department, I have always been thinking to, how to preserve our legacy of this very important institution, which continues to give motivation and, which inspires millions of students in our country uh, to actually carry on the spirit of research, to carry on the scientific temper in our, in our life and in our daily pursuit, and to also be inspired to achieve greatness with whatever you have. Nobody can have the best or the ideal circumstances to perform. So what is important is to perform anyways and to create an impact for the larger good with whatever we have. So it was, my suggestion that we should preserve part of it as a museum where students can come, where people from technical institutions can come, and they can also see, how we have progressed. So that is why I am very passionate about, making the growth of the institution very, very impactful and visible. So the way in which you people have made those standees, it is very important. Anybody who enters the institution gets introduced to the rich legacy
of NTH without talking to anybody. In fact, I would also suggest maybe you can, in this age of say digital technology, you can also have monitors which can be touch screen and which can have earphones where children can just by clicking things they can get a demonstration and they can also learn as they walk past the documentary or the videos that you can have. So some such inspirational videos can be or educational videos can be prepared and because I see that in the lobby there is lot of space, Yes, ma'am. enough space, है ना? तो कम से कम हम एक ये सोचें कि भाई 100 बच्चे भी अगर रोज आए या मान लीजिए कि समर वेकेशन में आए या इंटर्न्स आए तो उन्हें ये ओनरशिप होनी चाहिए कि मेरा भी एनटीएच में कुछ है. एज अ साइंस स्टूडेंट आई ऑल्सो own a little bit of NTH. So first of all, you must feel very proud, and I am sure you must be feeling, the same pride that you are working in this august organization. Now the next thing is we have to take it, to remain relevant and meaningful. You have to keep evolving. So which means we have to keep modernizing. We have to actually look forward to what are the new areas of challenges in the country. Now, as you can see, Honorable Prime Minister also says that by 2047, we will be one of the, we will be a developed country, but by 2030, probably we will be the third largest economy. So are we gearing for that challenge? So, which means that if we are going to be manufacturing, if we are going to invent and innovate, then testing is the basic infrastructure that should be available. Even our Honorable Minister, who also shares, Ministries of Commerce and Internal Trade and Industrial Promotion, because of him, we have also been able to appreciate that standards and testing go hand in hand if we have to boost trade and commerce. So this is very, it's a very important synergy. For the first time, I think even in BIS and also in NTH, there has been this understanding that standards formulation is not merely an academic exercise. It has a very significant practical role in the modern trade and commerce. Similarly, even testing is important because that brings credibility of products to the consumers. So if our products are to be the number one in a global market, then our testing has to be as per international standards. And all of you must be abreast with international standards, international processes, and how it is very important to remain objective, neutral, and at the same time, one of the best, the world's best, people should be here, right? I have also been trying to say that we should bring more interns, more young people to our labs, just like BIS has done. BIS has institutionalized the whole system. Even in legal metrology labs, what they are doing is, they are bringing students from different engineering colleges just to be interns, whether paid or not paid. But the fact is, if people are in those 2 months of recess, as a summer vacation or a winter vacation, if you can allow them, 15 days or 30 days, 45 days, whatever. So what will happen is that by word of mouth, more young people will be interested in actually coming to NTH, and that is what we want. So our engagement with the youth has to increase. The next is how our secretary
has been able to virtually spearhead, the entire, say, modernizing of NTH labs. And I must say that uh, it is because of him that today we have moved much ahead in the drone testing, say, requirement, and perhaps we will be the only government lab, perhaps the only government lab which is going to be testing the drones. And I think you should clap for yourself. These are the new things. If India has to, improve its delivery of services and delivery of products, drone is one such thing which comes very handy. It is not only used in delivering, say, vaccines, medicines. It is also used so much in, say, agriculture. Whether it is, you must have heard about nano fertilizers, how it can actually spray nano fertilizers. It is safe. And then, of course, there are also military purposes and other things. But the civil purpose of drone usage is going to be very, very high, phenomenally high. So I think NTH needs to be applauded for the fact that you have taken the lead and you have become the government, testing lab to be authorized for this role. The second thing is about the electric vehicles. Now, as we all know, we are committed to zero emission by 2070, and we are also signatories to the 30 at 30, which means that we have to achieve a certain, say, 30% sale of by 2030. So this shows, and figures are also there which are showing that India is exponentially rising in the usage of electric vehicles, whether it is two-wheelers, whether it is three-wheelers, whether it is four-wheelers, whether it is trucks or buses. So everywhere the electric vehicles are going to simply change the scenario, and therefore we need a very vibrant system of testing. And NTH has taken the lead, and I must give credit to your DG, who has relentlessly worked to ensure that these facilities are created in Mumbai, Chennai, and Bangalore and Kolkata. Yeah. Not in Chennai. But in Bangalore, we are trying to arrange some space with RRSL, and I'm sure this is how we are going to start. The other concept in our department is synergize. This is a major, it's a very major concept for development. We need not, think of development as a, as a silo, as an isolated world. In fact, BIS and NTH are virtually, they are going hand in hand. And virtually, DG NTH is meeting DG BIS on a very, very regular basis. या वहाँ से वो राजस्थान जाते हैं, तो ये कितना बड़ा कॉस्ट है भाई, लाना ले जाना। तो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी डिमांड है, यदि हम कोलकाता में इसको एस्टैब्लिश करते हैं, तो निश्चित रूप से हम वो कॉस्ट को बचा सकेंगे, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन में जो डेवलपमेंट होना है, हम उसमें अपना योगदान दे सकेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पिछले 1 वर्ष 2 वर्षों से कर रहे हैं। हमने ये भी कोशिश किया कि जो सारी लैब्स हैं उनकी टेस्टिंग लिम्स पे आ जाए। हमने ये भी इंश्योर किया कि गति शक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बना है, उसमें भी NTH का वो रहे। हमने ये भी इंश्योर किया कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में NTH के लैब्स का भी वहाँ पर एक प्रस्तुतिकरण रहे, ताकि जो व्यक्ति जहाँ कहीं से भी देख रहा है, जो मैन्युफैक्चरर जानता है या जानना चाहता है कि मेरा ये टेस्टिंग मुझे करानी है, तो मुझे सबसे नज़दीक का टेस्टिंग सेंटर कौन सा है और उसमें उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उसे ये तय करने में कितना आसान हो गया।
और इस तरह से हम जो राष्ट्रीय स्तर पे जो औद्योगिक ग्रोथ है उसमें हम अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हर बार हम इस बात को कहते हैं कि अगर वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स में हमारा योगदान होना चाहिए तो वो हम स्टैंडर्ड्स के माध्यम से ही अचीव कर सकेंगे। और स्टैंडर्ड्स को अगर हम लागू न कर सके, अगर डोमेस्टिकली ही हम लागू नहीं कर सके, और वो लागू कैसे करेंगे? टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इस एक उद्देश्य के प्रति अब अपने आप को संलग्न करें और अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें कि हमें वो कार्य करना है। और जो भी नए आइडियाज़ आपको भी आते हों तो आई एम श्योर आप देखते होंगे कि अभी आपको जैसे जॉइंट सेक्रेटरी को ये दायित्व दिया गया है कि हर महीने वो आप लोगों से बिल्कुल क्लोज इंटरेक्शन रखें। तो कोई भी इस तरह के कोई सजेशंस हों, कोई इनपुट्स हों, आपको लगता हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है इस रीजन में जो कि अनदेखी की जा रही है, तो उसे भी सामने लाएं ताकि हम इंश्योर करें कि हम अपनी लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करें और लोगों के लिए हम इसको लगा सकें। तो एक जो लास्ट में अपने भाषण में ये कहना चाहूँगी कि हमें ये भी देखना है कि जब हम कोई मशीन या कोई टेस्टिंग फैसिलिटी लगाएं तो हम उसकी वायबिलिटी और फिजिबिलिटी भी हम चेक करते हैं, ताकि हम ये नहीं करें कि हमने खरीद तो लिया लेकिन अब वो आइडल पड़ी है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय रिसोर्स जो है वो बड़ा स्पेयर करना कितना मुश्किल है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, फिजिबल है, तो हर तरह से सहयोग के लिए रास्ते खुले हैं। और हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली जो मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग साथ साथ हो जाए ताकि वो मशीन्स आइडल नहीं। और इन्हीं विचारों के माध्यम से हम लोग एनटीएच को अब अगले सेंटिनरी के लिए लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स, यानी 21-12 है ना, तो हार्डली कुछ समय रह गया। So take it to the next level. अगर हमने नोबेल प्राइज विनर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो क्या हम अगले 30-40 साल में क्या हम फिर कोई रिसर्चर इस तरह का ला सकेंगे जो कि उस लेवल पर जाए? तो निश्चित किया जा सकता है। एंड आई एम वेरी होपफुल एंड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट दैट अंडर दिस लीडरशिप we will all be able to achieve this rare feat, and we will be able to add this rare feather in our caps. With these words, I once again thank all of you since you have taken time out on a Saturday, which is a holiday for all of you, and I am extremely sorry kept you, because actually it is very difficult to come out on a working day. So that's how I apologize that you have to be. Thank you so much. ये सब आप मंत्रालय के जो मार्गदर्शन में हुआ है और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम मिलजुल के नई ऊंचाइयों को जरूर छूएंगे और निराश नहीं करेंगे। Any woman scientists? Thank you very much, madam. We have taken this proud privilege to have you with us in National Test House in Kolkata. It is more than 100 years it is running, and with so much legacy in our history. And definitely, as per your suggestion, we shall carry out in future the jobs you have assigned to us, and with the collaboration of BIS, RSS and other organizations also, we shall definitely train our scientists to so that we can achieve our goal, and definitely we shall try, sir, madam, that to reach to a certain level.